बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, जो कि पहले हम 120 एमसीक्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं। आज हम मज़ीद डिस्कस करने जा रहे हैं। आप में से जो लोग चैनल पर न्यू हैं, जिनने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आपको इस चैनल पर PPSC और FPSC इंग्लिश लेक्चर की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। काइंडली चैनल क्लास में सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली वो रिलेटेड है SST, जो फीमेल की सीट्स हैं FPSC की तरफ से जो अनाउंस हुई थी, उनका पेपर होना है दिसंबर में, तो उनके लिए है ये वीडियो। ख़ास तौर बहुत इंपॉर्टेंट MCQs इसमें शेयर किए जा रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज़ द अपीयरेंस ऑफ डैश विच नॉर्मली शोज अप एट अराउंड 8 months of age is an indication that a child's attachment to his or her primary caregivers is getting stronger. That is the appearance of stranger anxiety. Okay, the process of practicing self discipline, a concept labeled by Lev Vygotsky as self dash, is something that play helps children develop, that is regulation, self regulation. Psychologist Carl Jung believed that we do not establish a sense of self until we reach adolescence. By what age does Kohlberg's theory state that we tend to enter the conventional level of moral reasoning, that is early adolescence? When people are given a moral dilemma that presents no clear indication of right and wrong, leaving them with difficulty in giving a rational explanation of their own moral leanings, this is called moral, that is called moral dumbfounding. The process of growth and development are जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूस होता है. द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इज़ मोस्ट कंसर्न विद विच फील्ड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी. साइकोलॉजी की जो स्टडी है बेसिकली वो ज़्यादातर कंसर्न है साइंटिफिक इंक्वायरी की फील्ड जो है, दैट द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. endeavors to explain, predict and control phenomena are the goal of the scientific method. The scientific method is preferred over other ways of knowing because it is more reliable, systematic, accurate, all of these. If the differential threshold for a standard stimulus of 20 gram is 2 grams, then according to Weber's law the differential threshold for a standard stimulus of 50 grams is, that is 5 grams. Dash is considered the father of research on teaching, that is Joseph Mayer Rice is considered the father of research on teaching. नेक्स्ट है हमारे पास, अ बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट इज इंटरेस्टेड इन बिहेवियर दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड. एडवर्ड टोलमैन इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ डैश. ये एडवर्ड टोलमैन जो है ये फाउंडर था कॉग्निटिव साइकोलॉजी का. विद इन द ह्यूमन एम्ब्रियो, एक्टिविटी रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ हेयर एंड नेल्स इज सेंटर्ड इन द ectoderm. This type of design is known as, इस टाइप का जो डिज़ाइन है वो कहलाया जाता है मैच्ड पेयर डिज़ाइन. द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट इन दिस एक्सपेरिमेंट इज़ द दैट इज़ द आवर ऑफ द वर्किंग डे. Which of the following is the defining characteristic of random sampling? That is, each member of the population has an equal chance of being selected for the sample. Give me a child till that child is 5 years old and I will make of him anything you want: doctor, lawyer, thief. A likely quote from, that is from Watson. For best research control of genetic factors, which of the following should be used in experimentation? That is identical twins. Reviewing existing records to confirm a hypothesis about the behavior of a terrorist is, that is field research. The function of a theory is to, theory का जो function है that is to explain and relate observed facts. The life history method is a life history method जो है that is a longitudinal method. A researcher sits beside a playground, carefully observing a small group of children. The method being utilized is, that is field study. In a test situation, the examiner wants there to be only one independent variable, the individual being tested. To ensure this, the examiner administers a dash, that is a standardized test. Which of the following is no longer considered a scientific method appropriate for psychology? That is introspection. The purpose of Q technique is, Q technique का जो purpose है that is to measure a person's opinions of himself. Next है, Abraham Maslow is a chief proponent of the Dash school of human behavior, that is humanist school of human behavior. In psychology, the concept of motivation was first described in terms of instinctive behavior. On whose theory was this concept largely based? Darwin की theory पर base करता है.
Research design which contains features of both between subject and within subject designs is that is mixed factorial design. Last one of this video is any procedural variable which can cause a subset of the population to be non-representative of the population is that is a sample bias. I hope it's clear to all of you. Thank you very much. Allah Hafiz.